Good morning, students. This is Pinky Yadav from Suraj School, Mahendragarh. Students, I welcome you to Suraj Group of Education, and today we will learn about preposition. So dear student, before proceeding the topic, we will come to know or we will discuss about the definition of a preposition. Dear student, preposition is made by these two words, pre plus position. Pre means before and position means place. So dear student, preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relation to the other words in the sentence. So students, preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relation to the other words in sentence. Sentence में there are so many words are used, but to show the relation between the words we always use preposition. प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से बिफोर यूज होता है, प्री यूज होता है, और उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस वो बताता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल. My book is on the table. Table and book both are noun. So what is the relation between both? It is told by on. कि book जो है टेबल के ऊपर रखी है. Means बुक का जो प्लेस है, बुक की जो पोजीशन है वो कौन बताता है? ऑन बताता है. बिफोर द टेबल हम बिफोर द नाउन वी हैव यूज्ड ऑन, एंड इफ वी डोंट यूज ऑन सो वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन द बोथ. So next sentence, if I change the sentence, his book is laying under the table. Here also I have used table, but table से before मैंने यहाँ पर under यूज किया है. अंडर का मीन्स होता है नीचे, ओन का मीन्स होता है के ऊपर. इन द सेंस हिंदी में आप ओन का मतलब के ऊपर लेते हैं, बट नाउ वी विल कम टू नो और वी विल डिस्कस दैट ऑन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं एंड हाउ टू यूज, वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज. नेक्स्ट, ऑल द बुक्स आर in the bag. So all the books are in the bag. Here I have used in and here under. So these words are preposition which show the relation between the nouns. Clear? So through these example we have come to know about the preposition. Next, students, there are the types of preposition. First, simple preposition. Simple preposition. Simple preposition. Simple preposition means at, to, in, of, off,
by, till, behind, etc. There are so many preposition in, into, within, with, by, of, behind, across, above, over, upon, up, below, under. So these are the preposition which we use in daily uses or in the daily sentence. In the daily sentences we use these preposition. So first of all we will talk about the simple preposition. I mean to say, if we talk about at. At means in हिंदी सेंटेंस आप सेंस लेते हो इसकी पर की सेंस में आप at को यूज करते हो, बट इन यूजेस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. Now we will discuss about the rules where we use at. First of all, at is used for fixed time. For fixed time. To show the fixed time we use at. For example, like there are so many activities which are done by us at the fixed time daily. हम डेली बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो डेली अपने फिक्स टाइम पर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम डेली गेटअप होते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते हैं एंड देन रूटीन करते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारी स्कूल बस टाइम पर आती है, फिक्स टाइम पर आती है, आवर स्कूल ओपन्स एट द फिक्स टाइम एंड गेट्स ओवर ऑल्सो ऑन द फिक्स टाइम, फादर गोज टू ऑफिस on the fixed time, mother also does some activities on the fixed time. So in daily uses or on the daily basis बहुत सारी एक्टिविटीज हैं वो जो फिक्स टाइम पर होती है. सो टू शो द फिक्स टाइम वी यूज एट. आवर स्कूल opens at 8:30 am. Fixed time 8:30 am. So I have used here at. Fixed time show करने के लिए we use at. My father goes to office at 9 am. My uncle returns from the office at 6 o'clock in the evening. So like this we can use at for to show the fixed time. Next way we can use at. First we discussed about the fixed time and the second rule with the parts of the day. With the parts of the day. Dear student, parts of the day के साथ हम at use करते हैं, but there are some many parts. So with the some parts of the day we use at, but with the some parts we use in. Dawn, dusk, noon, night, midnight, and morning. Evening, afternoon. Dear student, these are the parts of the day with which we use at, but these three parts of the day with which always we use in. हम इन तीनों parts के साथ हम in use करते हैं, but these are the parts with which we use at. At dawn, at dusk, at noon, at night, at midnight. Dear student, if we use these parts of the day in the sentence, for example, I get up at dawn, in the dawn or at the dawn, because parts of day आए हैं तो at use करेंगे. My mother takes lunch at noon.
एंड नाइट और मिडनाइट के साथ भी ऑलवेज सम रॉबर्स entered my house at midnight. I went to my friend's house at night. तो इन वर्ड्स के साथ हम at यूज करेंगे एंड मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टरनून. यू हैव टू क्रैम these 3 words. You have to learn these words by heart that we always use in with these parts of the day. Next, first I told you that to show the fixed time we use at, and with the parts of the day we use at. And then to tell rate, price and speed. Whenever we talk about the rate, price and speed, we use at. Example, I drove my car at full speed. हम स्पीड की बात करते हैं, then I have used at. And next example, प्राइस की बात करें, this book is being sold at a high price. हाई प्राइस पर दिस बुक इज बीइंग सोल्ड, बेची जा रही है एट हाई प्राइस. सो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रेट, प्राइस एंड स्पीड, वी यूज एट. एंड द नेक्स्ट रूल, at is used with the name of the festival. Name of the festivals. Festivals के नेम के साथ we use at. Means festival like Holi, Diwali, Raksha Bandhan, Dasera. There are so many festivals which appears or which falls every year. So with the name of those festival which appears, which falls every year, we use at. Like I will wear this dress. I will wear this dress at Diwali. I will wear this dress at Diwali. Here you can find dash and you have to use here at or in. So always you have to use at because it is the name of the festival. With the name of festival, with the festival we use at. Next example. My father will gift me a car dash Christmas. Christmas is also name of the festival, so here also we will use at. Christmas is the name of the festival which appears, which falls every year fixed time पर आता है, so we have used here at. And if I write the sentence here, he gave me his book dash Christmas day. So dear students, what will you use here? At or on? There are two options here. You have to use at or on. You don't know? Can we use here at? Because it is the name of the festival. I told you that with the name of the festival we use at. But here it is not the name of festival. It is the name of the day. Here I have written day also. So with the day and date we use on.
डे और डेट के साथ हम ऑन यूज करते हैं, बट हेयर इज द नेम ऑफ डे, दैट्स व्हाई हेयर आई विल यूज ऑन, नॉट एट. And we are talking about at. We are discussing about at, where to use and how to use. So this is the sentence in which we use on preposition, because due to day. So these are the uses of at. At, after that we will discuss about to. To means how to use or where to use. What are the uses of to? To को हम कहाँ यूज करते हैं? To is used to show motion from one place to another. So dear student, whenever we have to show the motion from one place to another, when the object goes to another place, from one place to another, एक place से दूसरे place पर जाती है, then motion show होता है तो हम to use करते हैं. For example, my sister is going to school. My sister is going to school. मेरी सिस्टर जो है स्कूल जा रही है. मे बी सी वॉज एट होम, घर पर हो सकता है, बट नाउ सी इज गोइंग टू स्कूल. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है. ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्लेग्राउंड. एंड माई फादर गोज टू ऑफिस डेली. पापा घर पर रहते हैं बट ऑफिस जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो वी हैव यूज्ड टू, मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट रूल, टू शो कंपैरिजन. टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन शो करने के लिए हम टू यूज करते हैं. एग्जाम्पल, dear student, you know that to show the comparison we use degree of adjective. Degree of adjective, three types of degree of adjective: positive, comparative and superlative. But now I'm telling you that to show the comparison we have to use to. So I mean to say some words, with the some words, कुछ words ऐसे हैं जिनके साथ always we have to use to, like senior, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर. ये वर्ड्स हैं. दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक टू शो द कंपैरिजन. इफ आई यूज हेयर दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस इज शी इज सीनियर टू मी. वह मुझसे सीनियर है, मुझसे आगे है. सो इट इज टोल्ड हेयर और कंपैरिजन इज शोन हेयर. सो टू शो द कंपैरिजन आई हैव यूज्ड हेयर टू. सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ ऑलवेज वी टेक टू शो द कंपैरिजन. नेक्स्ट, टू टेल टाइम. फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल. And now we are talking about third rule, to tell the time. Time बताने के लिए भी always we to use to. It is 5 to 9. It is 10 to 5. I mean to say 9 बजने में 5 मिनट्स की अभी कमी है, कम है. अभी 5 बजने में 10 मिनट की कमी है. सो
Like this, whenever we have to tell the time, if anybody asks us what is the time by your watch, so we will answer that it is 5 to 9, 10 to 9, a quarter to 9. जितने की भी हमारे पास लैक होती है, कमी होती है, हम उसके बाद just we use 2 to show the time. So like this we use 2 to show the time. Next, fourth rule. I think I should rub the blackboard. So dear students, you have to practice this topic at home because this topic is learnt by practicing. If you don't practice, so you will forget all the rules. As you know, in speaking everything will do, but in grammar only rule will do. हमें rule learn करने ही पड़ते हैं. We have to learn the rules by heart. We have to cram. हमें rule learn करने पड़ते हैं. So two के we are talking about it. Two is used to show the feelings. To show the feelings. Feelings show करने के लिए we use to. Means for example, my, to show the feelings. Feelings means मेरी feelings क्या है किसी object के प्रति. ठीक है. My mother is so kind to the poor. Poor is an adjective, but before the poor I have used determiner, so it is here noun. It represent the whole family of poor. Whole poor people की whole family को represent करें. It means poor people है ये, poor लोग हैं, सभी जो गरीब लोग हैं उनको represent कर रहे हैं. So my mother is so kind. बहुत kind है किसके प्रति? Poor के प्रति. Towards the poor. So I have used here to show the feelings. Another example also you can take. She is very nice to the students. वो students के प्रति बहुत अच्छी. अपनी feelings show करने के लिए to show the feelings we use to. So like these examples, so these rule you have to learn and you can do this topic. Next, now we will discuss about it. We have discussed about at and to. Now I am going to next topic. Next, preposition. Dear student, ऑफ मीन्स आप हिंदी सेंस में ऑफ का मतलब से लेते हैं या फिर का, के, की. बट देयर इज डिफरेंस इन यूजेज. ऑफ शोज, इट शोज सेपरेशन. एंड ऑफ शोज बिलोंगिंग्स एंड रिलेशन. डियर स्टूडेंट, ऑफ रिलेशन बनाता है बट ओ एफ एफ रिलेशन ब्रेक करता है. इट शोज सेपरेशन, सेपरेशन और अवे फ्रॉम. इट शोज सेपरेशन और अवे फ्रॉम, बट ऑफ शोज बिलोंगिंग्स और रिलेशन मीन्स रिलेटिंग टू समबडी. और इट शोज द ओरिजिन ऑल्सो, origin and source. Of shows origin and source. So now we will learn through the example how can we use of or off. We will discuss about of first. This chair is made of wood. Belongings रिलेशन शो करता है. ये जो चेयर है ये किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है. इन द सेंस मैंने हिंदी में बताया आपको, से की सेंस में हम ऑफ यूज करते हैं. दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड. हेयर preposition of. Next, this pen is of रामलाल. ये पेन रामलाल का है.
बिलोंगिंग शो करता है कि ये पेन जो है रामलाल से बिलोंग करता है. एंड ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. He is a member of parliament. It is also shows belongings or relation. And if we talk about origin or source, he comes of a rich family. Means ये rich family से belong करता है. And if I give the more example, another example, there are so many examples which you can discuss. Through these example we should know, or we know that where we use of and how to use. So these are the example. I think these are enough. You can practice at home also. घर पर practice करेंगे. I have told you about the rules where we can use, how to use, कहाँ कहाँ हम use करेंगे. And if I talk about OFF, it shows separation. Separation show करता है away from. For example, by giving example or through the example, we will learn about OFF. He jumped off the horse. Means when he was sitting on the horse, he belongs to the horse. वह belongs करता था horse से. Horse was in the position of him. उसके position में था, वह owner था. But now he has jumped off. Jumped हो गया है horse से. Horse से नीचे गिर गया है. So it means separation show कर रहा है यहाँ पर. Clear? The leaves has fallen off the tree. Here also there is separation. पहले ट्री पर थे पत्ते, but now ट्री से नीचे आ गए, गिर गए हैं, fallen हो चुके हैं. So like this it shows the separation. So students, today we have discussed some of the preposition, but the rest of the preposition we will discuss in next video. This is all for today. Thank you.